Members of Parliament, Shri K.C. Venugopal, Shrimati Kanta Kardam, Shri Neeraj Dangi, Shri Samir Uram, whose birthdays were yesterday on 4th February, and also to Shrimati S. Phongnon Koinak on her birthday today. Shri K.C. Venugopal, whose birthday is on 4th February, he has been a member of this August House since June 2020 and serving his first term. Shri K.C. Venugopal had been a member of Kerala Legislative Assembly for 3 terms, 1996 to 2001, 2001 to 2006, and 2006 to 2009. Cabinet Minister in the government of Kerala for 1 term. He has served as member Lok Sabha for 2 terms and has been a Union Minister of State for 2 terms. Honorable member had also served as Deputy Chief in Lok Sabha. Shri K.C. Venugopal is a political and social worker by profession and is married to Dr. Asha K. and blessed with son Gokul and daughter Parvati. He has chosen the names very carefully, Gokul and Parvati. Srimati Kanta Kardam has been a member of this August House since April 2018 and serving her first term. She has played an important role in various social, cultural activities and several issues concerning awareness of human rights of downtrodden, deprived sections of the society, and has been vocal for their upliftment and rights. Srimati Kanta Kardam is an agriculturist, social worker by profession, and is married to Shri Veer Singh Kardam. She is blessed with 2 sons, Neeraj and Ashish, and daughters Upasana and Swati. Shri Neeraj Dangi has been a member of this August House since June 2020 and serving his first term. It is noteworthy that Honorable Shri Neeraj Dangi had made remarkable efforts in supporting the tsunami victims' families and post-tsunami relief work in Andaman and Nicobar Islands in February 2005, which was monitored by Ministry of Home Affairs, Government of India. He is a member of Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Honorable member is the son of late Shri Dinesh Dangi, a popular leader of Rajasthan, who had served as minister in government of Rajasthan. Shri Neeraj Dangi is an engineer, political and social worker by profession, and is married to Dr. Preeti Soni. He is blessed with 1 son, Yuan, and daughter, Katyayani. I had the good fortune to be in the assembly along with his father. Shri Samir Oran has been a member of this August House since May 2018 and serving his first term. He was a member of Legislative Assembly of Jharkhand for 1 term. As Minister of Committee of Welfare and Scheduled Castes and Scheduled Tribes as a member, he is enlightening the committee through his vast experience in the field of upliftment of SCs and STs. Shri Samir Oran is an agriculturist and farmer by profession and is married to Shrimati Sushila Oran. Shrimati S. Phongnon Konak has been a member of this August House since April 2022 and serving a first term. Honorable members, I would like to share that through her untiring efforts, she has been instrumental in admitting a large number of children aged between 6 and 14 years who would drop out or never enrolled to school into formal schooling in Mon Educational Block Resource Center, EBRC, and Aboi EBRC, which covers 37 villages. Her active role in the implementation of targeted intervention project at Aboi for injecting drug users, other vulnerable population, and being part of implementation of link workers scheme in Mon district for the prevention of HIV and AIDS is truly commendable. She also played an important role in initiation of the process of documenting Konyak cultural heritage.
Srimati S. Fanganon Konyak is a social worker by profession. Honorable members, on your and my behalf, I wish them a long, healthy, and happy life and extend greetings to their family members. Honorable members, I have to inform the House of the sad demise of the President of the Republic of Namibia, His Excellency Dr. Hage G. Geingob. He was a freedom fighter, statesman, chairman of the Constituent Assembly that formulated the Namibian Constitution, the first Prime Minister of independent Namibia, and the third President of the country. He dedicated his entire life to the welfare of his people and development of his country. President Geingob was a friend of India. President Geingob role in facilitating relocation of 8 Namibian cheetahs to India in September 2022 is greatly admired. On behalf of this House, we express our deepest condolences to the government and the people of Namibia. We share our sympathies with his family, friends, and admirers. We deeply mourn the passing away of His Excellency Dr. Hage G. Geingob. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. Papers to be laid on the table. General Retired V.K. Singh. Sir, with your permission, I rise to lay papers on the table of the House as mentioned against my name at serial number 2 in the list of business today. Shri Pankaj Chaudhary. माननीय सभापति जी, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 2 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। Shri Rajiv Chandrasekhar. Rise to lay the paper mentioned against my name at serial number 3 in today's revised list of business in Rajya Sabha, sir. Thank you. Shri Rameshwar Teli. महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम से उल्लेखित दस्तावेज राज्यसभा के पटल पर रखता हूं। श्री कौशल किशोर। सभापति महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 2/5 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रत हिंदी व अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। श्री वी मुरलीधरन। Respected Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Sri Ajay Bhatt, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 6 in today's list of business. Shri Pankaj Chaudhary. सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग की निम्नलिखित अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी तथा हिंदी में सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। पेट्रोलियम फूड के उत्पाद पर विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क को 1700 रुपया मीट्रिक टन से बढ़ाकर रुपये 3200 मीट्रिक टन करने के लिए दिनांक 19 जुलाई 2022 की अधिसूचना क्रमांक 18/2022, केंद्रीय उत्पादन शुल्क को संशोधित करने के लिए दिनांक 2 फरवरी 2024 की अधिसूचना संख्या 5/2024 केंद्रीय उत्पादन शुल्क। We have Mr. K.C. Venugopal here. I tried contacting him yesterday also. He was in the flight. I was telling the House, you chose the name of your children very carefully, Gokul and Parvati. Report of the Department-related Parliament Standing Committee on External Affairs, Dr. Ashok Kumar Mittal. Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy in English and Hindi of the 20th
28th report of the department-related Parliamentary Standing Committee on External Affairs, 17th Lok Sabha, on the subject countering global terrorism at regional and international levels, as listed against my name in today's revised list of business. Statement by Minister Shri Hardeep Singh Puri. Sir, with your permission, I rise to make the half-yearly statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 19th report of the department-related Parliamentary Standing Committee on Housing and Urban Affairs on demands for grants 2023-24 pertaining to the Ministry of Housing and Urban Affairs. Sir, I lay the statement. Honorable members, I have received one notice under Rule 267. The notice does not merit admittance. Matters raised with permission. Shri Samir Urang. माननीय सभापति महोदय, मैं ऐसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को सदन में आपके माध्यम से रखना चाहता हूं कि आजादी के 75 वर्ष हो गए हैं। गुमला जिला में आज तक रेल लाइन नहीं पहुंचा है। मैं बार बार सदन के माध्यम से आग्रह कर रहा हूं कि लोहरदगा से लेकर के कोरबा, ये धर्मजयगढ़ से कोरबा का लाइन प्रारंभ हो गया है रेल लाइन, और धर्मजयगढ़ से लोहरदगा 291 किलोमीटर है। ये कई बार इसका सर्वे हो रहा है, लेकिन ये निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है। गुमला जसपुर ये जनजाति बहुल क्षेत्र है, वहां से हमारे जो है देश के सेवा करने के लिए कई ऐसे सैनिक वहां देश की सेवा कर रहे हैं, और एक बहुल जनजाति बहुल क्षेत्र है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ये जो है सर्वे होने के बाद यथाशीघ्र यह रेल लाइन बने, जिससे कि गुमला से जसपुर और धर्मजयगढ़ से कोरबा और इधर जो है जसपुर गुमला से रांची तक जा करके वहां के जो सैनिकों के लिए रेल की सुविधा हो सकती है। वहां किसान हैं, किसानों को फल सब्जी के लिए आगे वो बढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ वो माइनिंग एरिया भी है, और इन सारे सुविधाओं से वो आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं कि माननीय रेल मंत्री जी इसको यथाशीघ्र निर्माण कार्य को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद माननीय समीर उरांव जी। ऑनरेबल श्री वाई को सब्जेक्ट नीड टू रिलीज नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड टू तमिलनाडु विदाउट डिले। Honorable Deputy Chairman, sir, the recent heavy rains and floods due to Cyclone Machong, which devastated 5 districts of Tamil Nadu, namely Chennai, Tiruvallur, Kanjipuram, Chengalpattu, caused loss of life and damages to vast public and private property, followed by these unprecedented heavy rains and waterlogging and floods in 5 districts, Tirunelveli, Thoothukudi, Kanyakumari, Chengalpattu, Tiruvallur, resulted in destruction of public infrastructure and made lakhs of people homeless. I have requested the Honorable Prime Minister and Home Minister through my letter dated 19th December to send a central team to visit disaster-prone areas for release of financial assistance. Our Honorable Chief Minister Thalapathy Stalin also requested for release of rupees 37,000 crore for providing relief to the disaster-affected people and to improve the public infrastructure which was damaged. We also demanded that the recent disaster occurred to Tamil Nadu be declared as a national disaster and adequate relief fund may be released immediately. In this connection,
or higher level the delegation of MPs from Tamil Nadu also met the Honorable Home Minister at Delhi on 13th January 2024 for expeditious release of funds, in which I was also present. In that meeting, the Honorable Home Minister assured that all formalities will be completed and adequate funds will be released soon. However, nothing had happened so far. Despite the report was presented by the central team to the Home Ministry, this is a stepmotherly treatment meted out to the state of Tamil Nadu. I would therefore demand that the disaster relief amount as demanded by the Tamil Nadu government may be released immediately to the state, as people are still suffering from the disaster and lot of relief and reconstruction works are awaiting for the funds. Thank you, Vaikoji. Dr. Fauzia Khan need to make dash cams mandatory for reducing hit and run cases in India. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. The amendment to Section 106 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, replacing Section 304A of the IPC, brings about significant changes in addressing road safety and traffic violations. Sir, Section 279, 304A, 338 of IPC apply in hit and run case incidents. In extreme cases, the police may book a hit and run case under Section 302. 302 जो खून करने पर लगता है, और कोई ड्राइवर जो 302 सेक्शन में बुक हो गया, उसको सजाए मौत हो सकती है या उम्र कैद हो सकती है। सर, कुछ दिन पहले इन प्रोविजंस को लेकर इसके विरोध में बहुत भारी संख्या में ड्राइवर्स एसोसिएशन ने रस्तों पर आकर प्रोटेस्ट भी किया था। सर, किसी भी एक्सीडेंट की सूरत में सबूत की बड़ी आवश्यकता होती है। अगर सजा इतनी भारी हो तो सबूत की स्पष्टता भी आवश्यक होनी चाहिए। One key aspect that deserves attention in the wake of these stringent measures is the promotion of dash cams. Dash cams have emerged as a valuable tool that can provide concrete evidence in the event of a road accident. So most countries in the world have adopted this on a large scale. Making the use of dash cams mandatory for manufacturers aligns with the objective of collecting reliable evidence, ensuring transparency, and facilitating a fair legal process. So today, seat belt beeps, plastic bonnets, and so on have been made mandatory for manufacturers. Dash cams may be made mandatory in the same way. The significance of dash cams becomes more pronounced considering the prevalent issue of tampering with evidence and corruption within the authorities. In advocating for the widespread adoption of dash cams, it is crucial to highlight their role in not only protecting law-abiding citizens, but also acting as a deterrent against corrupt practices by law enforcement, sir. Sir, these devices serve as an impartial witness, recording events accurately and discouraging unethical behavior. As India grapples with the challenges posed by strict traffic regulations, the incorporation of dash cams emerges as a practical and effective solution to address concerns related to accidents, evidence tampering, and promote responsible driving practices, sir. Thank you. Thank you. Manya Shri Imran Pratapgarhi, concern over unconstitutional action taken by DDA to remove encroachment in Delhi. उपसभापति महोदय, मैं डीडीए द्वारा उजाड़ी जा रही दिल्ली की दास्तान और कुछ ऐतिहासिक इमारतों की चीखें लेकर आपके सामने खड़ा हूं। एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। इसी 26 जनवरी को भारत के मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को रूहानी दिल्ली का दीदार कराने के लिए हमारी सरकार निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर लेकर गई थी। मेरी आंखों में एक तरफ तो यह तस्वीर है और दूसरी तरफ इसी सरकार के इशारे पर रात के अंधेरे में जमींदोज कर दी गई सैकड़ों साल पुरानी मामा भांजा, मंडी हाउस, काका नगर की छोटी छोटी मजारें हैं जो पूछ रही हैं कि हमें तोड़ा क्यों गया। उपसभापति महोदय, अबू धाबी जाकर शेख जायद मस्जिद में मुस्कुराते हुए सेल्फी लेने वाले प्रधानमंत्री जी को मेहरौली की 700 साल पुरानी अखूंजी मस्जिद के टूटने की चीखें क्यों नहीं सुनाई पड़ती।
डीडीए के अधिकारी सुबह 5 बजे अंधेरे में मेहरौली में एक मस्जिद, बच्चों के पढ़ने का मदरसा और एक मंदिर को जमींदोज कर देते हैं। जो डीडीए 1957 में गठित हुआ, वो अपनी पैदाइश से कई सौ साल पहले पुरानी मेहरौली मस्जिद को अतिक्रमण बताता है। क्या विकास प्राधिकरण संसद के बनाए हुए 1991 वर्शिप एक्ट को नहीं मानते? संसद से 4 कदम की दूरी पर मौजूद सुनहरी बाग मस्जिद, जिसका सैकड़ों साल पुराना इतिहास है, जिसके सहन में कभी संविधान सभा के सदस्य इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले मौलाना हसरत मोहानी बैठा करते थे, वो आज एनडीएमसी को अतिक्रमण नजर आता है। जिस मस्जिद को लुटियन बसाने वाले अंग्रेजों ने नहीं ढहाया, उसे एनडीएमसी और डीडीए उजाड़ना चाहती है। आखिर कब रुकेगा यह सिलसिला? तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। दूर कहीं अशफाकुल्ला खान, बीर अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर उस्मान की रूहें क्या सोचती होंगी? जामा मस्जिद की वो सीढ़ियां क्या सोचती होंगी जहां खड़े होकर कभी मौलाना आजाद ने लोगों को अपनेपन का यकीन दिलाया था। गैजेट, हेरिटेज, सैकड़ों साल का वजूद क्या हमारी संस्थाओं के लिए कोई मायने नहीं रखते? मैं आपके माध्यम से इस सदन से पूछना चाहता हूं और सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार देश को बताए कि वो 700 साल पुरानी इमारत को गैर कानूनी तरीके से जमींदोज करने वाले डीडीए के अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी। वो देश को यह विश्वास दिलाए कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर इस नए भारत के निर्माण तक सैकड़ों कहानियों की गवाह सुनहरी बाग मस्जिद को सुरक्षित रखा जाएगा। विरासतों को सहेजा जाता है, उनसे नफरत नहीं की जाती, उन्हें उजाड़ा नहीं जाता। धन्यवाद। Thank you. माननीय श्री वी विजय साई रेड्डी, subject demand to withdraw the draft de-reservation policy proposed by UGC. Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, as per the data submitted to the Lok Sabha in the month of August 2023, 4% of the professors and 6% of the assistant professors working in central universities belong to OBC. Sir, this number stands at 7% in the case of SCs and mere 1.5% in the case of STs. Sir, quite surprisingly, University Grants Commission, UGC, has issued recently draft guidelines de-reserving the vacancies meant for SCs, STs and OBC candidates in higher educational institutions and open up them for general category. This is very much unconstitutional and unwarranted, sir. The guidelines clearly state the ban on de-reservation of reserved vacancies in direct recruitment might be lifted in exceptional cases. I really don't understand what exceptionally exception cases and that are prevailing now for the UGC to take such a the unconstitutional steps, sir. Sir, the central, I draw your kind attention to the Central Educational Institutions Reservation Teachers Cadre Act 2019 clearly prohibits the de-reservation. Sir, the general procedure that is being followed and throughout India in all, not only in respect of educational institutions, but even in respect of other government bodies, non-government bodies also, unfilled quota positions in universities, in the case of SC, STs and OBCs. And if they are not filled and unfilled and re-advertised and then special recruitment drives are carried out till the suitable candidates are identified, and until the suitable candidates are identified and these vacancies are filled, this procedure will go on, and there's no occasion and there is no reason why this should be de-reserved, sir. Sir, my sincere appeal to the government to prevent UGC from implementing such draft guidelines that erode the constitutional rights and protections which have been conferred on SCs, STs and OBCs for in the case of reservation, sir. I urge the government to ensure that the vacant positions reserved for these OBCs, SCs and STs are expeditiously filled
and concerted effort should be made. Thank you very Thank much, you, sir. Mani Vijay Sai Reddy ji. Mani Sri Ajay Pratap Singh, demand to include Kol tribe in particularly vulnerable tribal groups, PBTG. माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का और सरकार का ध्यान कोल जनजाति की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। यह सर्वविदित तथ्य है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय आबादी निवास करती है। मध्य प्रदेश की आबादी का लगभग 21% आबादी जनजाति भाइयों की है। इन जनजाति भाइयों के बीच में लगभग 7.68% आबादी कोल जनजाति की है। मध्य प्रदेश की यह तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इसका उद्गम स्थल कहा जाता है रीवा जिले के फरेंदा गांव या कुराली गांव में है। ये जो कोल जनजाति है, इसके शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के अध्ययन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक समिति का गठन किया था। उस समिति ने सतना जिले के 5 गांवों का सैंपल के तौर पर चयन करके उनका जो अध्ययन किया है, उसके निष्कर्ष से मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं। उसके निष्कर्ष के अनुसार कोल जनजाति के मध्य जो शिक्षा का प्रतिशत है सतना जिले में, वो लगभग 32% है। सतना जिले की आबादी लगभग 22 लाख है। 22 लाख में से कोल जनजाति 2,68,000 है। 2,68,000 के बीच में मात्र चंद सैकड़ा लोग ही स्नातक हैं। कुछ लोग ही 12वीं की कक्षा पास किए हुए हैं। कोल जनजाति के लोगों के पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। ये सामान्यतः मजदूरी करते हैं अथवा खेतीहर मजदूर हैं। बड़े शहरों में रिक्शा चलाते हैं। इनके पास आवास के लिए भी कोई अपनी जमीन नहीं है। ये अन्य जाति के किसानों की जमीन पर बसे हुए हैं अथवा सरकारी भूमि पर बसे हुए हैं। इनका ये जो मुद्दे हैं, ये जो समस्याएं हैं इस कोल जनजाति की, इसको हल करने के लिए मेरा सरकार से आग्रह है कि जो अभी प्रधानमंत्री जनमन योजना लागू की गई है पीवीजीटी ट्राइब के लिए, उसके तहत या तो कोल जनजाति को पीवीजीटी ट्राइब के अंतर्गत शामिल किया जाए अथवा प्रधानमंत्री जनमन योजना का विस्तार कोल जनजाति तक किया जाए, जिससे कि उनका जो आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन है वो दूर हो सके और विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित हो सके और उनका भी उत्थान हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अजय प्रताप जी। माननीय श्री इरण कडाडी, नीड फॉर अमेंडमेंट इन एमपी लैट्स गाइडलाइंस। माननीय श्री इरण कडाडी, नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री मुजीबुल्लाह खान, डिमांड टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर्स टू ओडिशा। उपसभापति महोदय, आज आप बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आभारी हूं। सर, उड़ीसा में किसानों के लिए फर्टिलाइजर का बहुत कमी है। इसी के कारण हमारे माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी कई बार कृषि मंत्री जी को चिट्ठी लिख चुके हैं, बोल चुके हैं और केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि फर्टिलाइजर उड़ीसा में जो कमी हो रहा है उसको कैसा फुलफिल किया जाए। नेशनल लेवल का अगर देखा जाए सर, तो पर हेक्टर 137 मतलब 1 क्विंटल 37 केजी पर हेक्टर खर्चा होता है या फिर केंद्र सरकार देती है। लेकिन उड़ीसा में 66.17 माने 66 किलो ही फर्टिलाइजर दिया जाता है। उसका मतलब काफी कम है, 50% करीब कम दिया जाता है। इसीलिए हमारा डिमांड है सर, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में उड़ीसा में 76% लोग इन्वॉल्वमेंट है। 87,46,000 हेक्टर में फसलें होती है सर, उसमें 18,79,000 हेक्टर इरिगेटेड लैंड है। इसके बावजूद, इतना डिमांड करने के बावजूद पता नहीं क्यों हमारे फर्टिलाइजर शॉर्टेज हो रहा है। केंद्र सरकार क्यों नहीं सुन रही है मुझे पता नहीं। आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि हमारे उड़ीसा में एग्रीकल्चर फार्मर्स बहुत अच्छा फसल कर रहे हैं। इसी के कारण जो कृषि कर्मण अवार्ड जो दिया जाता है केंद्र सरकार की ओर से,
वो उड़ीसा सरकार को 5 बार से ज्यादा दिया जा चुका है। उसका मतलब बहुत ही अच्छा फसल उड़ीसा के किसान लोग कर रहे हैं। सर, मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि पहले दिन ऐसा था, कुछ साल पहले ऐसा था कि लोग खाने को अनाज नहीं पाते थे। छोटे छोटे बच्चों को पेट में अनाज देने के लिए उनके परिवार का जो पिता होता था, जो भी होता था, वो चोरी करके ला के अपने बच्चों को अनाज देता था सर। इसीलिए खेत से अनाज चोरी हो जाएगा, इसके कारण बहुत से किसान रात को खेत में जाके सोते थे, खेत में जाके जगते थे सर। लेकिन आज स्थिति ऐसा है, कोई खेत में जगता नहीं है, कोई खेत में सोता नहीं है, क्योंकि सबके घर में अनाज है सर। उसका मेन कारण है, उसका मुख्य कारण है कि उड़ीसा का सरकार, उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो किसानों के लिए जो योजना किए हैं वो उनको लाभ दे रहा है और बहुत सुविधा से किसान अपने परिवार को पोषण कर सक रहे हैं सर। उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक योजना है कालिया योजना, जिसके तहत किसानों को 5,000 रुपया हर सालाना दिया जाता है और 50,000 रुपया तक सर उनको बिना इंटरेस्ट के लोन दिया जाता है, जिसके कारण किसान आज उड़ीसा में खुशहाली है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो ये फर्टिलाइजर शॉर्टेज हो रहा है, कैसा इसको फुलफिल किया जाए। आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करता धन्यवाद हूं माननीय कि मुजिबुल्लाह उड़ीसा के खान जी। किसानों को डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी कंसर्न ओवर राइजिंग केसेज ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड इन द कंट्री। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय, नर्मदे हर। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार एवं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आज हर भारतीय ऐप, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग या अन्य डिजिटल ऑनलाइन साधनों के माध्यम से अपने लेन देन की दैनिक क्रिया को बिना समय गंवाए आसानी से पूरा कर रहा है और यह डिजिटल युग का कमाल है। कोरोना महामारी के काल को माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व ने आपदा को अवसर में बदल कर रख दिया है, जिसका परिणाम अब सबके सामने है। दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल लेन देन हमारे देश में हो रहा है, यह हम सब के लिए गौरव का विषय है। माननीय उपसभापति महोदय, जैसे जैसे तकनीकी का विकास हो रहा है, उसी के साथ साथ बहुत बड़ी चुनौतियां भी आती जा रही है। इसी क्रम में इस डिजिटल युग में डिजिटल लेन देन ऑनलाइन के माध्यम से कुछ लोग फ्रॉड या ठगी या धोखाधड़ी कर रहे हैं, जिसकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। हमारी सरकार इस प्रकार का फ्रॉड करने वाले लोगों के लिए कई प्रकार के कानून लेकर आई है। पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन के माध्यम से फ्रॉड या ठगी करने वाले मामलों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में बैंकिंग क्षेत्र में लगभग 13,500 ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले दर्ज हुए हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले निजी बैंकिंग क्षेत्र में हुए हैं। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत को पिछले 7 सालों में हर रोज औसतन करीब लगभग 100 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ बैंक फ्रॉड या स्कैम के जरिए हुआ है। माननीय उपसभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार एवं निजी एवं सरकारी बैंक के अधिकारियों से एक सवाल भी है। यदि हमारे देश के सभी बैंक खाते आधार से जुड़े हुए हैं, आधार कार्ड पहले से ही तकनीकी रूप से सत्यापित हो चुके हैं, तो यदि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई फ्रॉड या ठगी होती है, तो हमारे सिस्टम में ऐसी क्या खामी है जो हम फ्रॉड करने वाले लोगों के खातों को ट्रेस नहीं कर पा रहे या पकड़ नहीं पा रहे हैं? यदि इस प्रकार की कोई खामी है तो उसे दुरुस्त किया जाना चाहिए और दोषी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाना चाहिए। ऐसे असंख्य केस है जो लिखित में नहीं आते हैं। मैं भी दूर दराज आदिवासी क्षेत्र से आता हूं। यह पीड़ा मेरे क्षेत्र के लोगों की भी है। एक कॉल या एक मैसेज में आए लिंक को खोलने मात्र से उस गरीब की मेहनत शून्य हो जाती है। माननीय उपसभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निजी क्षेत्र के बैंक का अधिकारियों से विशेष आग्रह है कि वो अपने वित्तीय लेन देन के सिस्टम को इतना मजबूत बनाएं कि किसी गरीब के लिए यह बैंकिंग धोखाधड़ी श्री संजीव अरोरा।
Thank you, Deputy Chairman, sir, for allowing me to take up this important issue. This is mainly regarding state of Punjab. I would like to draw the attention of the government through you to a significant issue concerning the wage rate notified under Manrega for the state of Punjab. The rate finalized for the state of Punjab is 303 rupees per day compared to higher rates in neighboring states, especially Haryana, which is 357. The minimum wage which Punjab government has done is 413 rupees. So my request is not only Punjab, in whole of nation, Manrega should match the minimum wage finalized by the state if it is higher. I mean, otherwise people do not want to work for Manrega schemes, and two things happen. Unemployment is also there, and then these schemes are not implemented. Even the total fund allocation on this account to the state of Punjab is going down as per official data from last years. In light of these disparities, I humbly request government through you to intervene to reevaluate the current wage rate for Punjab under Manrega. It is imperative that the wage rate is increased to bring it to par with either the neighboring state or the minimum wage as set by the Punjab state government. Thank you. Thank you. श्री हरनाथ सिंह यादव। माननीय सभापति जी, मैं भारत सरकार के उपासना स्थल कानून 1991 के मनमाने और असंवैधानिक प्रावधानों की ओर आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। महोदय, उपासना स्थल 1991 में कहा गया है कि पूजा स्थलों की जो स्थिति 15 अगस्त 1947 की थी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस कानून में श्री राम जन्मभूमि को अलग रखा गया है। माननीय, यह कानून संविधान में वर्णित समानता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जो संविधान की प्रस्तावना और मूल संरचना का एक अभिन्न अंग है। महोदय, इस कानून में प्राविधान है कि श्री राम जन्म मुकदमे के अतिरिक्त अदालतों में लंबित ऐसे सभी मुकदमे समाप्त माने जाएंगे, और यदि कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे 1 साल से 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। महोदय, उपासना स्थल कानून 1991 न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है, जो संविधान की बुनियादी विशेषता है। यह कानून एक मनमाना और तर्कहीन कट ऑफ तिथि भी लागू करता है, जो हिंदू, सिख, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के धार्मिक अधिकारों को कम करता है। माननीय, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद जो लोग लंबे समय तक सत्ता में रहे, वे पूजा स्थलों की महत्ता को नहीं समझ सके, और उन्होंने राजनीतिक फायदों के लिए अपनी ही संस्कृति पर शर्मिंदगी होने की प्रवृत्ति स्थापित की। उन्होंने कहा कि कोई भी देश अपने अतीत को भूलकर एवं मिटाकर और अपनी जड़ों को काटकर प्रगति नहीं कर सकता। महोदय, इस कानून का स्पष्ट अर्थ यह है कि विदेशी आक्रांताओं द्वारा तलवार की नोक पर ज्ञानवापी और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि सहित अन्य पूजा स्थलों पर जो बलात् कब्जा किया गया, उसे विगत सरकार द्वारा कानूनी रूप से सही ठहरा दिया गया है। माननीय, यह कानून मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवान श्री कृष्ण के मध्य भेदभाव पैदा करता है, जबकि दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। महोदय, यह स्थापित तथ्य है कि समान कृत्यों और समान परिस्थितियों के लिए दो कानून नहीं हो सकते। दूसरे, कोई सरकार किसी भी नागरिक के लिए न्यायालय के दरवाजे नहीं बंद कर सकती। महोदय, यह उपासना स्थल कानून पूर्णतः अतार्किक, असंवैधानिक है। हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों को संविधान में प्राप्त धार्मिक अधिकारों का हनन करता है, जो देश के सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ रहा है। अतः मैं आपके और सदन के माध्यम से देश हित में इस कानून को अविलंब समाप्त करने की मांग करता हूं। धन्यवाद। श्री एडी सिंह। Thank you, Deputy Chairman, sir. Need for India's effective engagement in the Arctic region. India fulfilled a long-standing need and signaled its rising interest and stakes in the Arctic with the release of the Arctic Policy
on 17th March 2022. The study of the Arctic is critical to Indian scientists as it influences our monsoon, which directly imparts agriculture sector on which almost 60% India's population is dependent. The rising sea levels due to the Arctic ice melt also threatens India's 1,300 island territories and the welfare of 1.4 billion Indians. The Arctic meltdown also helps India's scientists better understand the glacial meltdown in Himalayas, the largest source of fresh water outside the poles and home to almost all of India's perennial rivers. It is for this reason that India is the only developing country apart from China to have a permanent research station in the Arctic since 2008 and has undertaken 13 scientific expeditions to the region. The Arctic therefore presents India with a complex set of opportunities as well as challenges to secure its increasing national interest. Firstly, India should seek a more inclusive and equitable Arctic Council with a greater say for the observer states in the decision-making process and more freedom in pursuance of the research objectives in the Arctic region. Secondly, India should also fine-tune its own internal mechanism to impart a greater impetus to its Arctic endeavors with a more singular, coordinated and cohesive approach by appointing an Arctic coordinator. I urge the government to coordinate its efforts in playing a pivotal role in the Arctic region. Thank you. Honorable members, welcome to the parliamentary delegation from Republic of Suriname. Honorable members, I have to make an announcement on my own and your behalf. I have great pleasure in welcoming Sri Marinus Bey, Chairman of the National Assembly of the Republic of Suriname, and the accompanying members of the parliamentary delegation of Suriname who are on a visit to India as our honored guests. The parliamentary delegation from Suriname arrived in India on Sunday, 4th February 2024, and now are seated in the special box. Besides Delhi, they will visit Agra before their final departure from India. We wish them a happy and fruitful stay in our country. Through them, we convey our greetings and best wishes to the members of Parliament of Suriname, the government and friendly people of Suriname. Santosh Kumar P. Shri Santosh Kumar P. Thank you, Chairman, sir. Sir, there is an urgent, a critical need to increase the minimum wages of our workers in the country. Minimum wage is a concept which is universally accepted for combating poverty and stabilizing the economy. But unfortunately, in our country, the national minimum wage is shockingly low. That is just 178 rupees for 8 hours. So the trade unions, central trade unions, and the Samyukta Kisan Sabha, Samyukta Kisan Morcha are demanding an increase in this, and at least 26,000 rupees must be provided for the workers in our country. As we all know, 90% of the workforce actually are in the informal sector. They don't have any social security, no security for their jobs. So the working conditions are also very miserable. In fact, there is no job contract as such. And in states also, between the states also, there is huge disparity. For example, in Kerala, it is 837
for 8 hours. Whereas in Gujarat, it is 296 and in Tripura, it is 250. So there is huge disparity amongst the states as well. So we have to enhance the minimum wages. Anup Satyavarthi committee recommended in the year 2019 that at least 375 rupees must be the minimum wage. That is not yet accepted. And this was revised last in 2017. So I urge the government to increase the minimum wages of our workers who are actually the backbone of our economy. There is a system in government sector and corporate sector to provide DA and to increase salary. But these people are left without any social security or any such system. Then their bargaining capacity is also very low. So once again, I take this opportunity to request the government through you to take necessary steps to enhance the minimum wage of our poor workers. Thank you, sir. माननीय सदस्य अशोक कुमार मित्तल जी। धन्यवाद। आज मैं इस सदन के सामने दुनिया भर के 3 करोड़ सिख व करोड़ों अन्य श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़े एक मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। भारत सरकार टूरिज्म प्रमोशन के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाती है, जिसमें एक योजना है स्वदेश दर्शन, जिसमें 5200 करोड़ की कीमत से 76 प्रोजेक्ट शुरू किए जा चुके हैं। इस योजना में पूरे देश में प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान गौतम बुद्ध और भगवान महावीर से संबंधित धार्मिक स्थलों को आइडेंटिफाई करके सर्किट के माध्यम से अलग अलग राज्यों में विकसित किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल ही गुवाहाटी में शक्तिपीठ कामाख्या देवी जी के मंदिर की डेवलपमेंट के लिए भी 500 करोड़ रुपए का लागत से बनने वाला शिलान्यास रखा, जिसके लिए भारत सरकार बधाई की पात्र है। मैं पंजाब से आता हूं, जो श्री गुरु नानक देव जी, श्री गोविंद सिंह जी और हमारे अन्य सिख गुरुओं की पवित्र धरती है। इन सभी गुरुओं ने दुनिया को मानवता, धर्मनिरपेक्षता और एक ओंकार का पाठ पढ़ाया है। हमारा महान श्री गुरु ग्रंथ साहब लोगों को निस्वार्थ सेवा करना सिखाता है, समाज से जुड़ना सिखाता है और उन सबको बराबर का सम्मान देना सिखाता है। सिख धर्म के 5 तख्त हैं, श्री अकाल साहब अमृतसर, श्री केसगढ़ साहब अनंतपुर साहब, श्री दमदबा साहब तलवंडी साबो, श्री पटना साहब पटना और श्री हजूर साहब महाराष्ट्र के नंदेड़ में स्थित है। इसके अलावा पूरे देश में सिख धर्म से जुड़े हुए बहुत सारे ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, जैसे कि गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब उत्तराखंड, गुरुद्वारा श्री पोंटा साहब और गुरुद्वारा श्री मणिकरण साहब हिमाचल प्रदेश, गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब पंजाब। इन सभी धार्मिक स्थलों की आस्था और मान्यता को देखते हुए पूरे विश्व भर से हर वर्ष करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मैं सरकार को बधाई दूंगा कि उन्होंने सिख सर्किट के लिए एक ट्रेन भी शुरू कर दी है। अब मेरी मांग है कि स्वदेश दर्शन योजना के माध्यम से सिख सर्किट भी शुरू किया जाए, जिसमें हर राज्य में सिख धार्मिक स्थलों का विकास करके भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाओं का निर्माण हो, ताकि इन सभी धार्मिक स्थलों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी दी जाए। इन सभी स्थलों को आपस में व मेट्रो सिटी से रेल, रोड, एयर के माध्यम से जोड़ा जाए, ताकि सभी श्रद्धालुओं को जो पूरे देश से दुनिया से आते हैं इन धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का लाभ मिल सके। धन्यवाद। माननीय सदस्य जी, आपका समय समाप्त, अब नोट पर नहीं आएगा। माननीय सदस्य श्री मोहम्मद नदीमुल हक जी। Thank you, madam. Need to release funds under NFSA owed to Bengal. The union government has withheld the release of rupees 7,000 crore to a state of West Bengal to procure paddy under the National Food Security Act. The state government has successfully acquired 8.52 lakh tons of paddy for the central pool this fiscal year. The state aims to achieve 80% of its annual procurement target during the ongoing Kharif season, which extends until the end of February.
timely release of funds is crucial, otherwise the entire procurement process may be affected. The halt in funds to Bengal stems from the need for NFSA logos and the Prime Minister's pictures to be put up across all ration shops in the state. Madam, it is ridiculous that the union government is willing to jeopardize an entire state's food security over a delay in plastering the Prime Minister's image, which is a time-taking task. This is the union's rationale to withhold the funds. So Madam, let me read out a quote from Prime Minister Modi from 2018, and I quote, "Federalism is no longer the fault line of center-state relations, but the definition of a new partnership of Team India," unquote. However, since the current government has come into power, there has been a systematic deprivation of states, pushing people into distress in regions where they are incapable of winning elections democratically. Madam, the union government has blatantly carried out anti-federal policies and engaged in fiscal federal terrorism, denying Bengal funds worth rupees 1 lakh crores under several schemes. Despite pleas from a chief minister, party leaders and beneficiaries, the union has chosen to remain indifferent. This goes against the very spirit of the constitution. This goes against the people of Bengal. I challenge you, fight us democratically, fight us in elections, but do not make crores of people suffer for your political vendettas. I urge this government to immediately reimburse rupees 7,000 crore for procuring paddy under the National Food Security Act. Thank you, Madam. माननीय सदस्य श्री जवाहर सरकार जी, अनुपस्थित। श्री राकेश सिन्हा जी है? यस। Huh? Madam, we had requested the Government of India to change the name of the state of West Bengal to Bangla. This has been pending from 2016. And the West Bengal Legislative Assembly has taken a unanimous resolution that if, say, the name of Odisha can be changed to Odisha. आप सब्जेक्ट पे बोलिए, आपका सब्जेक्ट ये नहीं है। डिमांड फॉर क्लासिकल इंग्रेडिएंट status for Simultaneously, Bengal. we have been agitating for the inclusion of Bangla as a classical language. We have taken a resolution on this score, and we have submitted a 4-volume research paper to the Government of India on this subject. We asked for consideration of the details submitted thereon to establish the antiquity of the language of Bangla in syntax, in grammar, and largely in alphabet from the 4th century BC. It is our humble submission that our case as to include Bangla as a classical language be considered positively. माननीय श्री एस सिल्वागन वेथी। श्री बिजलाल जी, स्टेट ऑफ। बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदय। उत्तर प्रदेश में भगवान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और वहां पर शुरुआत में काफी रिस्ट्रिक्शन के बाद फुटफॉल 5 लाख पर डे था। एवरेज वहां पर फुटफॉल हो रहा है 3 लाख। और ये जो फुटफॉल है न केवल अयोध्या में, काशी में और मथुरा में, ये इतना फुटफॉल है कि इससे पर्यटन को बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। और उत्तर प्रदेश जो हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं, उसमें $1 ट्रिलियन योगदान उत्तर प्रदेश का होगा और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान होगा धार्मिक पर्यटन का। अयोध्या में के विकसित होने से पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहां का मैं भी रहने वाला हूं, वहां के लोग
विकसित होंगे। काशी में काफी फुटफॉल हो रहा है। जब से वहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्वनाथ कॉरिडोर का बनाया, जिस तरह से उसको ब्यूटीफाई किया है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है हमारे पर्यटन में। उपसभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में एक है बुद्धिस्ट सर्किट। बुद्धिस्ट सर्किट के जो 3 मुख्य स्थान हैं, 4 स्थान कहिए, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती और हमारा जिला सिद्धार्थनगर है, जहां पर है कपिलवस्तु जन्म स्थान। कपिलवस्तु 1972 में खुदाई हुई। उसके पहले भी अंग्रेज भी वहां खुदाई करा चुके थे और वहां स्तूपा मिला। वहां पर भगवान गौतम बुद्ध महाराज के पिता सुशोधन महाराज जी का महल मिला और ये केमिकल एनालिसिस से ये प्रूव हो चुका है कि जन्मस्थल है। वहां उनकी अस्थि भी मिली थी जो दिल्ली में रखी हुई है। तो हमारा अनुरोध यह है कि भारत सरकार को ये जो बुद्धिस्ट सर्किट है, इसके विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और मैं प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूं कि कुशीनगर में उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है और ये जो जगहें हैं बुद्धिस्ट सर्किट भी है, वो अयोध्या और काशी यहाँ के आसपास ये बुद्धिस्ट सर्किट हैं। और खासकर मैं कपिलवस्तु के बारे में कहूँगा कि उसको हम लोग उतना कैश नहीं कर पाए। अभी वहाँ पर व्यवस्था नहीं है, होटल्स नहीं है, रुकने के अच्छे स्थान नहीं है और केवल वहाँ पर जो रास्ता है केवल गोरखपुर से और वहाँ तक ट्रेन की उसमें, बस्ती से वहाँ तक बड़ी अच्छी सड़क बन चुकी है। तो मेरा अनुरोध ये है भारत सरकार के कि जो बुद्धिस्ट सर्किट है उसको सुदृढ़ किया जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत से जो बुद्धिस्ट। माननीय सदस्य संगीता यादव जी। माननीय सभापति जी, आपने मुझे भारत में किशोर लड़कियों और महिलाओं के मासिक धर्म स्वच्छता संबंधी राइट टू हाइजीन पे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको आभार प्रकट करती हूँ। यह एक ऐसा सब्जेक्ट है माननीय सभापति जी जो देश की 50% आबादी से जुड़ा हुआ मामला है और 2017 से लेकर 22 तक जब मैं एमएलए थी तो मैं लगातार बड़े स्कूलों, जितने भी हमारे बच्चियां हैं जो 11 साल से ज़्यादा थी, उन सभी स्कूलों में और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं थी उनमें मैंने फ्री नैपकिन हमें हमेशा बांटने का काम किया 5 साल और जागरूकता अभियान भी चलाया। इसमें माननीय सभापति जी, गांव के हमारे प्रधान, पूर्व प्रधान, जो प्रशासनिक अधिकारी थे, उनका सबका सहयोग मिला। पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में ये चर्चा का विषय भी ना, नहीं तो ये बंदिशों में ही हमेशा रहता था। और माननीय सभापति जी, हजारों महिलाओं और बच्चियों को हम लोगों ने गर्भाशय से जुड़े हुए अनेक बीमारियों से बचाया। तो मैं इसमें 0 आवर के माध्यम से मैं आपसे कुछ अपील करना चाहती हूँ। माननीय सभापति जी, माननीय मोदी जी ने भी लाल किले से इस मुद्दे पे चर्चा किया है और जब से पैडमैन मूवी आई तब से ये चर्चा का विषय और ज्यादा विस्तृत तौर पे हुआ। लेकिन आज भी 5वें राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के अनुसार, स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार केवल 36% महिलाएं ही सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करती हैं। बाकी आज भी अज्ञानतावश अस्वच्छ सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो माननीय सभापति जी, ये इससे बहुत ज्यादा गंभीर बीमारियां बच्चियों में, महिलाओं में फैल रही हैं। मैं सिर्फ आपके माध्यम से इतना ही अपील करूंगी कि सरकार इसमें अच्छा काम कर रही है, हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन इसको मिशन मोड में करने की आवश्यकता है। एक तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करूंगी कि इसको मिशन मोड में ले आया जाए, क्योंकि ये राइट टू हाइजीन देश की आजादी के इतने वर्षों बाद भी आज भी हमारी समस्या बना हुआ है। और यूट्रस कैंसर एक ऐसा कैंसर है माननीय सभापति जी जो ज्यादातर 4th स्टेज पे ही मालूम पड़ता है, ये इसी से जुड़ा हुआ है। और भी बांझपन की समस्या हुआ, संक्रमण की समस्या है, सर्वाइकल कैंसर है जो अभी बजट में भी हमारे माननीय मोदी जी ने रखा है, उसमें हमने चर्चा की है। लेकिन ये अगर इसमें हमने काम किया तो हमें ये अपनी 50% आबादी को बहुत सी बीमारियों से बचा पाएंगे। और 2 अपील और करूंगी माननीय सभापति जी आपके माध्यम से कि इस काम के जो हमारे लोकल जनप्रतिनिधि हैं, मिशन मोड में जो सरकार अभी कर रही है उसको शामिल किया जाए, लोकल एनजीओ को शामिल किया जाए। धन्यवाद। क्वेश्चन और नाउ क्वेश्चन और प्लीज संगीता जी बैठ जाए। क्वेश्चन नंबर 16 ऑनरेबल श्री आर गिरिराजन प्रेजेंट। माननीय मंत्री जी। Thank you. Laid on the table of the House. Thank you. First supplementary. Please be brief in your question. Sir, in his answer, the Honorable Minister has said the price of CNG
at Delhi has increased by just 1.30%. Sir, in 2021, the price of CNG was increased 4 times. Please question Mr. R. Girirajan. Yes. That's why I'm asking. On February 8, 2021, the price of CNG was increased from 49.90 to 49.40 per kg. The highest CNG price was recorded in Mr. R. Girirajan, please question. Question. Raised in 115. Sir, my question. CNG is considered to be an eco-friendly and cost-effective fuel compared to diesel and petrol. The very purpose of encouraging the use of CNG is to reduce pollution and is much cheaper than diesel. Mr. R. Girirajan, your question has not come till now. My question is whether the government has taken steps to bring back the prices of CNG to rupees 50 per kg and would like to know the total compressed CNG. Thank you. Please be brief in your question. माननीय मंत्री जी, जवाब भी briefly ही दें. Sir, I'm entirely in agreement with the honorable member that the government should encourage more consumption of compressed natural gas because it's relatively a cleaner fuel. Although there is a debate in the West whether even that's an entirely green fuel or not, but I won't get into that. It is for that reason, sir, the government has ensured the reference period in the question was the last 18 months. And the government has ensured that whilst global prices were witnessing turbulence, massive increases, shortfall, honorable member just now in his supplementary referred to an earlier period than 18 months. There was a period when there was a lockdown, and lockdown prices don't reflect reality prices. For instance, during the lockdown, the crude price came down to $19.56 a barrel, and then it shot up to 128 and 130. Sir, we were able to do this for two reasons. We rationalized our system of calculating cost in April 23, and as a result of which, whilst the global prices were $53.51, the Japan-Korea, I'm citing Japan-Korea because those are two large consuming markets, and China is also part of that. One market to the east of India, Japan, Korea, China. The other is the Western India market, which is west of India towards the Middle East. Both those prices were very high, $53.51 per million metric British thermal units,